function of contact, or what kind of problems they're facing, whether they're their husbands or not. It's very superficial. So then they look for the job, and then what happens? They if they look for the job, will they get? If they don't get the job, then they are engaged in unlawful activities. So what happens? Who is to blame? The question comes, who is to blame? Is it the state which has abdicated its role of providing access to proper education, health, sanitation, and assured income, instead of adopting welfare-oriented policies? The government is allowing privatization of education policies. Private educational institutions have become numerous. The students who can afford to pay very high fees to admission, as a result, the premier public educational institutions are languishing and have become devoid of good students and teachers. Here one recalls, this is my last point, Gandhiji's concept of Noi Talim and Tagore's vision of education for equality and integration of humans with nature and physical and mental labor. Thank you. Thank you, Vidyut Madam. I hope I am audible now. Yes. Yes. Okay. Next, I now invite Urmi Madam, the founder director of Berhampur University Women's Study Center, to deliberate her views. Ma'am, please 5 minutes. Thank you. Respected Chairperson, Professor Madhumita Das, my teacher, Professor Asa Hans. Am I audible? Yes. Professor Asa Hans, Professor Manoranjan Mahanti, Professor Vidyut Mahanti, and all Professor Sonamoy Tripathi, all the audiences, and my teachers, students, scholars, सबू जेते सुधी वृंद अच्छंती मु ओडिया रे ही कहूची टिके टिके इंग्लिश मिसिबो हिरणमयी ओलिभा जति सबू आजी बहुत जाहु कंसर्न जे मानकर प्रकृत रे वर्तमान कार्यस्थल वुमेन स्टडीज ता ताहारी सेई मानको डका हेछि। आई एम थैंकफुल टू गवेषणा चक्र जे गोटे समय स्पेशल सेशन पई रखी चंती आउ टाइम भी एटा भी टाइमली केमिति मु एट द एंड ऑफ माय टॉक मु कहिबी आमको जेहेतु 5 मिनिट अछि मु खाली शीघ्र तार चैलेंजेस गुडा को कहिबी किंतु प्रथमे तो मो सांग मणि मेखलाई she has really set the tune to speak on challenges because women studies ता गोटे केवल जेमिति पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स एम सब डिसिप्लिन अछि एमिति गोटे डिसिप्लिनरी स्टडी हिसाब रे प्रथम तो आरंभ होई नथिल इन अमेरिका कोठी मध्य सेटा गोटे मूवमेंट रो आरंभ हेतिला किंतु ओडिसा रे आ इंडिया रे एटा गोटे एकेडमिक इनिशिएटिव हिसाब रे आरंभ हेछि जोथि पई कि आमे गोटे बहुत बड़ कंफ्यूजन टीचर स्टूडेंट्स आ जे माने पॉलिसी मेकर यूजीसी वाले समस्त को पाखरे ही ए कंफ्यूजन टी हमर रहिछि जे एटा कोन मुना मजुंदार कहथले इट इज ए पर्सपेक्टिव इट इज उपेंद्र बक्सी कहथले इट इज नॉट ए क्लासरूम टीचिंग इट इज ए मूवमेंट केते जन कहती इट इज एन एक्शन आउ आमे मध्य देखिछु मोर गत 30 वर्ष रो वुमेन स्टडीज रे जते बेले काम करूथली सेथे देखिछि एटा गोटे बोथ थ्योरी आ गोटे प्रैक्टिस ए दीटा माने आमे जो कथा कहू
जो नॉलेज गेन करिछु ताकू केते भाबरे हमें इम्बाइब करू आ ताकू ता पई सत्य भाबरे केते हमें छिडा ही पारू एटा ही हमर मेन कथा वुमेन स्टडीज रो प्रकृत रे नारी मानकर मुक्ति पई विभिन्न वे रे प्रोफेसर विद्युत महांती कहले जोठी फील्ड रे आइडेंटिफाई करिया सेटा हो सबुठु बड़ कथा हमें आइडेंटिफाई करिया दरकार कोठी प्रकृत रे प्रॉब्लम अछि हमें जदी सेटा को जानी पारुछु तापर हमर जो थियोरेटिकल बेस अछि हमें ताकू धरि की जदि हमें किछि करिवार अछि whether we are in academics NGO और जोठी पॉलिसी रे हमें निश्चय करिया किंतु हमर जदी से मानसिकता नथिबो बा मानसिकता थिले स्ट्रक्चर और पावर जदी भी गोड़ टाणु थिबो हमें केबे करि परिबा नाही तेनु ऑल ओवर इंडिया रे आ ओडिसा रे केवल एटा गोटे एक्शन बा गोटे थ्योरी इंस्टीट्यूशन हिसाब रे नेले होबा नै दीटा को मिसै की करिया कथा ओडिसा कथा मु कहूची इन ओडिसा वुमेन स्टडी रिसर्च सेंटर बरहमपुर यूनिवर्सिटी वाज द प्रीमियर तापरे उत्कल यूनिवर्सिटी आरंभ करिथिले सेटा विषय रे भी प्रोफेसर मधुमिता दास कहिचंती तेनु मु ता ऊपर जाउ नै वर्तमान रमा देवी रे मध्ये जेंडर स्टडीज सिमिलर स्टडीज आरंभ हो गेलानी चैलेंजेस गुडा को कहबे को गले मु दुई तीनटा पॉइंट कहूची फर्स्ट होची टीचिंग बोली टीचिंग टा को the only and the only one thing बोली भाभी नै छै टीचिंग ऊपर किछि मात्रा रे रिसर्च भी किछि भलो भाबरे हो नै जोटा कि मैडम कहले जे बाहर डिसिप्लिन रो लोक माने रिसर्च करथिन किंतु वुमेन स्टडी लोक माने मध्ये ऑल इंडिया रे आपण देखंतु किछि रिसर्च करलेने आ एक्शन मध्ये पब्लिकेशंस मध्ये करूछन आ यूनिवर्सिटी सिस्टम रे अनफॉर्चूनेटली जे माने अथॉरिटी टिके पार्टीटा बंद करांतो अन्य मानको म्यूट कर दियन तेणु अनफॉर्चूनेटली अन्य डिपार्टमेंट भली एई वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट रो आशा करा जाय जदी कोठु गोटे रेप केस हे गेला आमे जाय कि राज रास्ता रे छिड़ा हे गेल आम ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन निया जाय कोठु गोटे फील्ड रे गोटे गरीब लोक माने तांकर दाना पानी पाउनांती तांको पई जदी फाइट कलु आम ऊपर पूरा भिंडिक्टिव हे कि आमे मु जहा मोर भक्त होगी मु सेई कथा कहूची तेणु इट इज नॉट ए वेरी simple task to be a faculty or a staff in women studies it is a challenging one jemiti theory ta challenging it is reading materials मु कहउतिल थरे आके नै पचल काई से रीडिंग मटेरियल जोटा रिवोल्यूशन करे मु कहली सब बही रे रीडिंग मटेरियल अपन देखले भलो बही देखंतु वुमेन स्टडीज रे तेणु एटा गोटे केवल संग्राम रो स्थल जदि आमे पाठ पढ़े की पिलांक माइंड को ठीक रे भाव रे उत्तेजित करि न पारिबु एनकरेज न करि पारिबु राउज न करि पारिबु टू स्पीक आउट देन आमर एटा दोष तेणु आमर पिला माने जदि राउज करिया पई जाइचंती तबे एई वुमेन स्टडी को भांगी दियो ए माने पुरुष मानक विरुद्ध रे आछंती सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस रो गोटी जदि के सस्पेंड हे गेला तेणु आमे पूरा बदनाम हे गेलु फॉर लाइफ लॉन्ग तेणु आमे भी जानूचो केमिति कैलकुलेटिवली निज काम करि देई पारि थांतु किंतु हुए तो आम मानक माइंड रे सेटा नाही बोली आमे आज पर्यंत करि नाउ किंतु केवल डिपार्टमेंटलाइज डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट वाले या करि देले से स्टेरियोटाइप हे जिवो आर जो प्राथमिक उद्देश्य सेटा डिपार्टमेंट बोली आमे कहूचे मधुमिता मैडम कहले किंतु डिपार्टमेंट जदि भी न करूचे तेणु आर स्टाफ फैकल्टी स्टूडेंट स्कॉलर मानकर कोनसी गोटे निजर आइडेंटिटी रोनी मु एटा को डिटेल कहू नाही जदि प्रश्न किए पचारंती मु कहिबी समस्त एटा अनुभव करूथिबे तापर इंटरडिसिप्लिनरी आउ यूनिडिसिप्लिनरी आ भितर मध्ये बहुत कंफ्यूजन गोटे खिचड़ी स्टडी बलिया समस्त भाबंती केते थोर त मु नॉन एकेडमिक लोक मानक पाखरे जोटी हमर फाइल पड़ी ताय मध्ये गोटे खिचड़ी स्टडी की खिचड़ी स्टडी ना ए इंटरडिसिप्लिनरी माने कोन बहुत एकेडमिशियन प्रोफेसर माने मध्ये सेया बुझंती त आपण माने भाबुथिबे हमर अवस्था यूनिवर्सिटी रे केमिति जदि हमें जो डाइकोटोमी कहउचंती मैडम मणिमेखलाई मैडम इट विल बी unidisciplinary or it will be merged in any discipline if it will merge in any discipline then it will take its color it will not be have its own charm आर जो गोटे स्कॉलास्टिक गोटे अछि गोटे राइगर अछि अन्य डिसिप्लिन अपेक्षा कोनोसी डिसिप्लिन रो स्टडी पूर्ण हुए नाही जे पर्यंत जेंडर लाइन रे आमे न भाबिचु जेंडर लाइन रे आमे थिंकिंग न करिचु रिसर्च न करिचु तेनो एइटा गोटे जिनिस रहला तापरे another problem होची मु कहबी चेंज जोटा को यूजीसी प्रॉब्लम ता मणिमेखलाई मैडम कहि गेले गवर्नमेंट आउ जे कोनोसी रिक्रूटमेंट भीतर आपण देखंतु यूपीएससी हो पीएससी हो जे कोनोसी एंट्री पॉइंट रे वुमेन स्टडीज एटा मु पार्टिकुलराइज करूची जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम गुडा को पिला मानकर आउ हमर फ्यूचर वुमेन स्टडी स्कॉलर मानकर जोटा कि नाही आदु वुमेन स्टडी इज नॉट अ सब्जेक्ट इन सोशल साइंसेस आल्सो तेणु आउ जो पावर थर्ड दिन साला पावर पॉलिटिक्स
मु खाली स्किप कर जाउची आलोचना बेले करिवा पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स आ वुमेन स्टडीज रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज आ रोल ऑफ एंड वुमेन स्टडीज पावर पॉलिटिक्स माने जोटा कि राइट विंग पॉलिटिक्स कथा छाड़ंतु से तो हेबे एक्सट्रीमिस्ट वुमेन मानन को चेष्टा करछन्ती से माने फैमिली स्टडीज भितर पुरै देबा पई हमें एडब्ल्यूएस माध्यम रे करैछु किंतु एडब्ल्यूएस माध्यम रे मध्ये हमें पार्टिकुलर वुमेन स्टडीज रो प्रॉब्लम मध्ये एटा समस्त प्रॉब्लम बोली भाबिया दरकार वी हैव ट्राइड वी हैव फेल्ड आईएडब्ल्यूएस हैज नॉट टेकन अप तापरे आउ फंडिंग यूजीसी फंडिंग आसिकी भी पड़ीची यूटिलाइज करले दियंती नाही आज पर्यंत भी मो अभिज्ञता रे ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रे बहुत पड़ी अछि आ उत्कल यूनिवर्सिटी रे बहुत फेरी आई अछि मध्ये तापरे विभिन्न यूनिवर्सिटी रे रेभेन्सा रे मते जा अस्मा मैडम कहतले बहुत बड़ प्रपोजल लिखि लिखि मध्ये तांको दउ नाहंती किंतु आमे जानि विश्वास केते फंडिंग पाइछि आ केते काम करिछि काम करिवारे आमे कहि केते बळे इनवाइटेड हेइ न तापरे गवर्नमेंट आ यूनिवर्सिटी यार मध्ये फंड अछि गवर्नमेंट आ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मध्ये फुल फ्लेजेड करि सारला पळे मध्ये सेटा को मूल को उपाड़ी देबा पई चेष्टा करा जाइछि आ गवर्नमेंट मध्ये फंडिंग उत्कल भलिया यूनिवर्सिटी भलिया बेस्ट यूनिवर्सिटी हमर जो ओडिसा रे मध्ये हेले जहा भी जति अछि ता भितर भी से वुमेन स्टडी सेंटर ता भी गुटे स्टंटेड हे कि वर्तमान मु जाईथिली बहुत खराब लागिला जो अवस्था रे पड़ीची मैडम सारी दियंतु टिके सारी दियंतु मु सारी दउची तबे वर्तमान आउ प्रॉब्लम को हमें जीवा नै स्टूडेंट प्रॉब्लम सब अछि मूवमेंट कथा भी मु कहू नै अन्य माने कहिलेनी गोटिए मात्र मु सजेशन दबा पई चाहूची गवेषणा चक्र हमर गोटे बहुत माने सेक्युलर इंस्टीट्यूशन आम इंस्टीट्यूशन तेनु जदि आमे एटार गोटे सेशन रे रखिछु जेमति गोपालन गोटे कहउतले मु सेति पई गोटे आमे नै परिबा कि आमे मेमोरेंडम देई परिबा कि जे वुमेन स्टडीज ता फर्स्ट ऑफ ऑल सबु यूजी लेवल रे हो आउ सबु रिक्रूटमेंट रे वुमेन स्टडी गोटे सब्जेक्ट रो एति कि आमे जदि मिनिमम करि दउ गोटे चारियाडे लिखि कि दबा प्रेसिडेंट सीएम को लेखि कि लबा यूपीएससी को सबु को लेखि कि दबा पीएससी को लेखि जदि आमे दबा आउ ता पछरे आमे मूवमेंट चलेबा चेष्टा करी कि मो सहित जदि आउ गोटिए टीचर गोटिए स्टूडेंट मो लाइन रे जदि आम गवेषणा चक्र भीतर थिंकिंग रो बाहरिबे किंतु बाहर नुहे बाहर विभिन्न उद्देश्य रखी कि मध्ये एटार बाहर जंती तेनु एटा जदि आमे करि देबा तापरे इट मे बी फुल प्लेजेड थैंक यू मैडम the point you have raised is that though we have institutionalized women's studies into higher education, but we have failed to take up the advocacy part. Now I invite Professor Jyotirmaya Acharya, Professor Ramadevi University. Madam, are you there? Jyotirmaya yes, I am here. Okay, madam. Yeah. Esteemed chairperson, Professor Madhumita Das, Professor Asa Hans, my teacher, Professor Swarnamay Tripathi, and my panel co-panel members. It is my privilege to be a part of this Gaveshana Chakra and discussion. There are many concerns, many points which has been still so far discussed. For me, I would like to highlight two things. What Professor Mani Mikhala said, the integration of feminist scholarship, which is a concern, which is actually required. Maybe that should be a medium through which we can achieve our purpose and goals. For example, the integration should not happen only within the although we know that this is a multidisciplinary course and all the subject area students or faculty member can conduct their research in their own context because gender is prevailed all over across all the sectors. However, so far I don't think there is much action or strategic plan of action has been taken to integrate the feminist scholarship in the curricula in other discipline, and then which was also one of the concern of objective of University Grant Commission, which is mentioned in their foundation of Center for Women Study Center. How to do that?
That should be one of the point of concern and strategic plan of action for the Gaveshana Chakra, for all the members of the Gaveshana Chakra. That integration will take us not only at the academic level, but also at the community level. So the sponsored, they look at how this women's study is valuable to the society at a long run. To look at that, we have to look at how we can also integrate the grassroots knowledge, the indigenous grassroots activism or knowledge, and transform it into academic knowledge. So that is the way how we can also contribute our part to the society. So which has not yet been properly planned or strategized. Small projects are not enough to transform or express their voices, but there should be a concrete platform to integrate their voices, their activism, what they are doing at the grassroots level, and how the innovation of knowledge is also and the girl child against many things. So whatever written in our sustainable development goal number 5. We should create a platform for that. That should be one of the area where we have to strengthen and collectively we need to work out. And then the integration is like many other discipline, they have their association. In Odisha, we do not have Women and Gender Studies Association. Though we don't know, like in centers, we have only one director, some guest faculty. Anyway, the like-minded people who are working there, we need to have our own association to raise our voice um, and also heard our voice at a higher level educational institution. That is one thing. And then the democratization of this knowledge in a common platform and at a national or global level. So it is not should not be confined only to the state of Odisha, but at a national level or our global like-minded person. For example, we have started in our own department. We have started collaborating with University of California, and what we found that although the department is anthropology, but she is equally taking a very good course, women in politics and state. Okay, so this type of integration in all the academic sphere, how we can integrate in their course curricula. For example, we know that traditionally we have this course curricula, like in political science, all the social science subjects, they have a course on gender studies or women studies. But then who are teaching, what kind of training they have, and how the knowledge has been transformed to the students to make a lot about this women studies and to pursue their higher career, higher education and career in that particular domain. That is which is lacking. So that now the students who are coming to join in women's gender studies or women's studies, they are like they have not got the result in all their core discipline, so they are joining here. But we need to have a conscious and very serious students who can pursue their career and do research and excel. So there will be a lot of research which will be generated out of this serious mind. Not only, but we have all the infrastructure. We know that in UGC we have NET examination in women studies and all these things. But there is a gap how to organize all these things in a strategic way so that we can achieve our goal. So that is the things which is lacking. So that is my concern also. So, like other institutions, we have a good number of faculty members, and thanks to our founder, Vice Chancellor, who has founded this gender department, gender studies, and also the Utkala University. But the situation and infrastructure which required, that is somewhere very gloomy. So, I think we need to have a
continuous such kind of discourses and discussion and a lobby at a higher education level along with our like-minded, our so that we can achieve our goal and we can have better scholars, feminist scholars who can spread the knowledge and spread the purpose of these gender studies and reach out to the marginalized and poor people, which is the real aim of this studies and objective of, so that more integration, more inclusivity and mainstreaming our issue will be achieved. So thank you very much. I think I have told in an abstract manner, but we need really a association. I don't know how you will take it over. Thank you so much for giving me. Thank you, Jyoti madam. You have rightly pointed out the gaps in our women's studies. Now I invite Dr. Oliva Mahanti, Associate Professor, Gender Studies, Ramadevi University. She has the experience of being a part of women's studies in Utkal University, and right now she is in Ramadevi University. Madam, if you can address the question, what are the reasons behind shrinking women's studies? It is there in the chat box. Oliva, madam, are you there? Yes, madam. Yes. There is a question in the chat box. If you can address that question, what are the reasons behind shrinking women's studies? Yes. Okay. So, madam, going to address means answer this question. Madam, let Oliva madam answer that question. Yeah. Because we have very little time. Yeah. Thank you, madam, for giving me an opportunity to share my feeling in this topic. So when we are thinking about the shrinking of the subject, because a lack of support, lack of academic and administrative support, I will say, ओडिया मु कहूची तो आमे कहूचु आजी जो परिस्थिति रे वुमेन स्टडीज रही आमे आजी वुमेन स्टडीज टा इंट्रोड्यूस हबार देखुचु आमे 2001 मसिया उत्कल विश्वविद्यालय रे एटा आमे इंट्रोड्यूस हेची आज सब्जेक्ट जोटा कि हमर आशा हंस मैडम कर उद्यम रे सेटा स्थापित हेइथिला तथापि आज आमे एते वर्ष परे मध्य आमे देखुचु जे से सब्जेक्ट टा सेति की गुरुत्व पाई पारी नाही काहेकि ना बहुत किछि लाकुना ता भीतर रहउची जेमति कि आमे उर्मी मैडम तो बहुत किछि कहिले से विषय रे सेति पई हमर प्रत्येक स्तर रे हमर सरकारी स्तर रे ओडिसा गवर्नमेंट बा हमर भारत सरकार कर सपोर्ट दरकार आ हमर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रो सपोर्ट दरकार जेमति कि मु निजे फेस करिछि पिला माने जते बेले इंटरव्यू दबा को जानती बारंबार आसी कि कहंती मैडम इंटरव्यू रे हमर सब्जेक्ट ता नाही जदियो सोशल वर्क गोटे सब्जेक्ट आसुची किंतु वुमेन स्टडीज सब्जेक्ट हम सेथिरे नाही तेणु आमे इंटरव्यू अपियर करि पारुनु आपण गोटे लेखि कि देई दियंतु जे एई सब्जेक्टटा गोटे सोशल साइंस सब्जेक्ट बोली एते दुखर विषय कहिले भी मते बहुत खराब लागुची ए पर्यंत मध्य सब्जेक्ट गोटे सोशल साइंस रो मान्यता दिया जाय नाही जोटा कि हमें एकेडमिक काउंसिल रे से सब्जेक्ट टाको अप्रूव करई सेते बेले पिला मन को देई कि से माने पिला माने हमर जेते जो एनआरएचएम हला बा जो हमर डीआरडी रे हला जेते कि बाहर इंटरव्यू पिला क्वालिफाई करिया पई बहुत स्ट्रगल से मान को करिया पई पड़ीची तो सेई सब्जेक्ट को कोन पई आज पर्यंत सोशल साइंस रो मान्यता दिया जाई पारिनी मु सेटा कहि पारुनी हमर यूनिवर्सिटी तरफ रु हम डिपार्टमेंट तरफ रु हमें प्रचेष्टा जारी करिथिलु किंतु मते लागुची बोधे किबा प्रत्येक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हमर जेते गवर्नमेंट रो जो डिपार्टमेंट सब रही समस्त बुझा दरकार जे एटा गोटे सोशल साइंस सब्जेक्ट सेटा गोटे मु भाबुची हमर गवेषणा चक्र तरफ रु आमे जदी गोटे किछि लेखिकरी मेमोरांडम दियंते डिपार्टमेंट को बहुत भलो हंता प्रत्येक डिपार्टमेंट खाली जे हायर एजुकेशन से कथा नुए जेते डिपार्टमेंट रे बाहरुची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो बा हमर हेल्थ डिपार्टमेंट हो सबथि को लेखि दबा दरकार आ उर्मी मैडम जेंती कहिले ओपीएस रे पिला माने देई पारु नांती सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रे मध्य सब्जेक्ट ता रहुनी तो ए सब रो जो इशू रही छि ताकू हमकु सॉर्ट आउट करिया को हेले मु भाबुची बोधे खाली हमें एटा पीएचडी और वुमेन स्टडीज भाबरे हायर एजुकेशन रे रखी देइचु किंतु दरकार पूरा स्कूल रो मते लागुची हमें जदी
क्लास 7 रु ए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करिवु स्कूल रो पिला जदी पढ़ी के आसिला व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी जदी जानिला बा ता विषय किछि पढ़िला ग्रेजुअली आमे ताकू रखिले जते बेले +3 रे गोटे इलेक्टिव बा ऑनर्स भाबरे आज पर्यंत अडसपुर कॉलेज गोटे जगह रही आ कोनोसी कॉलेज रे हेई पानी ता फल रे हमर पिल्ला माने आज पर्यंत एते एते पिला पास करके पाई पारु नांती जॉब एबे भी क्वेश्चन करंती मैडम आमे करिवु कोन आमे तो पीजी कर देलु एमफिल कलु पीएचडी कलु तापरे हमर फ्यूचर कोन से क्वेश्चन रो सामना पिला को करिया पई मते बहुत दुख भी लागे तांको कोन कहिबे मो भाबी पारेनी तथापि से पिला मानकर एते आग्रह जते जते पिला भलो पाठ पढी चंती से माने कोनोसी ना कोनोसी जगह रे जाई पिला जेआरएफ की अछंती पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही की करचंती किंतु वुमेन स्टडीज रो सब्जेक्ट को नै कि सही जगह रे करि पारि नांती खाली एई प्रकार प्रॉब्लम पाई सी सिलेबस रे किछि बदे हम रिस्ट्रक्चरिंग करि कि रखुछु पिला मन जाय कि एनजीओ सेक्टर रे किछि सा सुजोग तथापि पूर्ण मात्रा रे से माने पाई पारु नांती तेणु मध्य जो आमे भाबुचे बा कहूचे गवेषणा पई कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से माने बहुत किछि स्कोप से मन को दबा दरकार सेमिति स्कोप रिसर्चर मान को हमको क्रिएट करिया पड़िबो जेंडर इशू जेंती ज्योति मैडम कहउतले फेमिनिस्ट रिसर्च स्कॉलर को हमको डेवलप करिया पई पड़िबो सेही एंगडी कले हम गोटे गुड को सक्षम ही परिबो देई परिबा ता छडा मो स्पेशल पोस्ट गवर्नमेंट सब डिपार्टमेंट क्रिएट कर पोस्ट थिला गवर्नमेंट क्रिएट करथिला ताले से कोन करनते से मानकर सर्विसटा डेलीवरी करि पारंते सोसाइटी को मते लागुची पिल्ला माने इथरे कम हे परिबे तेनु ए जो गोटे इंटीग्रेशन सपोर्ट दरकार होची जेते वर्ष हलानी गोटे एलुमिनाई एसोसिएशन करी की पिल्ला माने got muted. सहयोगरे आउ आम समस्त सहयोगरे किछि परिमाण रे पिला माने उपकृत हुअन्ते आ वुमेन स्टडीज रा किछि सक्सेस करि पारंता बोली मोर सेटा अभिमुख्य एति की मैडम कहूची धन्यवाद Thank you, Olivia madam. Now I request Dr. Hiranmay Mishra, Director Women Studies in Odisha Autonomous College. That is the only college in Odisha where undergraduate teaching in women studies is imparted. So, madam, you can highlight on the pedagogy you use in your college for teaching women studies at the undergraduate level. Yes, thank you, madam, very much. Good evening, everyone. Samastu sabutu youngest, but here panel. I have also a number of concerns actually. When I am being introduced as the only center, running the only center, I feel it. In 2011, England we fought a lot along with our GB Sahita Jamor, both support Kortulia, Jetu Amro, GB Achanti Tiluchan Karango, who is a very, I would say that very progressive person. So we started in 2011 actually, the Women's Studies Center for UG. But after that, as I am also a writer and quite recognized as a writer in Odisha, so I go to different colleges and I have requested, I have helped, I have sent them emails, I have sent the UGC how to open UGC Women's Studies Center, everything I have done at my level. Almost request there are lots and lots of number of autonomous colleges now in Odisha. Very recently, I PN college as a guest because principal, I always make it a point to meet the principal in the UG colleges wherever I go, just to put this point that please extend this to your college. 2011 to 2022, it's very unfortunate that none of our colleges have got it or have tried at least chesta karna di kehi bhi jote center rakhiya pe UG pila ka pai. Olivia madam kahili je school level lu daba katha. We are not interested even to open it at the UG level. How can we expect it to? Hame kemti expect karibe je school level
स्कूल आसीबो बोली तापरे आमे भी निजे एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आमे बहुत चेष्टा करिछु एंड मु कहबी जे मु ऑलमोस्ट जो माने एठी अछंती प्राय ओनली एक्सेप्ट ज्योति मैम मु प्राय समस्त को सहित बारंबार ए विषय कथा बर्ता भी हेची मु डाकिची कॉलेज को मोर आई हैव कोलैबोरेटेड विथ एक्शन एड ऑक्सफार्म जते भल्ला भल्ला अछि हमर एनजीओ से माने सहित कोलैबोरेटेड करछि एंड एज ए राइटर मु बहुत समय लिखिछि वुमेन इश्यूज ऊपर ओडिया रे लिखिछि इंग्लिश रे लिखिछि Madam, may I intervene here right now? I have heard that you have government has introducing women in social institutions. Government of Odisha. Could you please highlight on that? Yes, I am moving on to that issue also. So, ए सब सत्य भी एपर्यंत आउ कोनोसी कॉलेज रे हेई परला नाही. Isn't it? एटा हमर lack of interest बोली मु भाबुची we are responsible for it only. मोर मु दुई तीनटा कथा कहबी बेसी कहया पे समय नाही. सेकंड कथा हैला जा मैडम माने समस्त एसएसबी रे पीएससी रे नेट रे अछि सब्जेक्ट किंतु से कोठी रिक्रूटिंग अथॉरिटी माने कोठी को सोशल साइंस रे रिकॉग्निशन दोनांती बा किछि भी सिटवे सो इट इज लूजिंग इट्स अपील एज अ सब्जेक्ट कहीं ना जॉब फैसिलिटी नहीं पर्टिकुलरली इन एकेडमिया रे नहीं जॉब फैसिलिटी सेति पे बहुत हायर स्टडीज करिया पे बहुत बड़ा सेटा गोटे हर्डल होची थर्डली एबे मु जो कथा कहउतली जे हमें गोटे इलेक्टिव सब्जेक्ट करी पाया पे गवर्निंग संगे बहुत प्लीड करू किंतु हेला नहीं बट लेट बट जो वैल्यूज इंट्रोड्यूस हला अक्रॉस द स्ट्रीम्स साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब पिला माने पढिबे तार फर्स्ट पेपर ता हला एथिक्स एंड वैल्यूज रो वुमेन इश्यूज जोटा कि फॉर्चूनेटली और अनफॉर्चूनेटली नवनीता रथ मैम का संगे मते भी सुयोग मिलला हमें दी जन मिसी कि से फर्स्ट पेपर ता लिखि जे बहिता एंड वी हैव ट्राइड कि सब कथा जहा जहा गोटे इलेक्टिव पेपर रे आसी परिबा कथा व्हाटएवर से सब जिंस तक ता भीतर रखिया पे हम चेष्टा करिछु एवं इट इज आल्सो वाइडली एक्सेप्टेड बहुत प्रिंसिपल माने मते फोन करूछनी बहुत अननोन लोक माने मते फोन करूछन जे इट्स बीन ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप जदियो डेरी हेची किंतु बहुत भलो कथा एथिक्स एंड वैल्यूज रो डिफरेंट पार्ट्स अछि हमें आउरी तापरे भी थर्ड सेमिस्टर पाई बही आसीबो फोर्थ सेमिस्टर पाई आसीबो एवं वन बाय वन सबुथरे हमें किछि जेंडर जो ये जेंडर पार्ट ता किछि सबुथरे रखिया पे हम चेष्टा करूछु एवं दैट विल बी देयर बट जदि गोटे इलेक्टिव सब्जेक्ट भाबरे आसी थांता सब कॉलेज माने and they are always मु सब बेले कहू जे मु सपोर्ट करिया पे सब प्रकार चेष्टा करिवे सब प्रकार सहायता करिवे किंतु सेटा केही हेले टेक अप करि नांदी another thing I would like to raise here I don't know whether this is the right platform or not you look at all the women study centers there are staff samaste women look at this panel we are all women सब जको women faculty so we have to admit that there is a long way to go to recognize women's issues as social issues and also women studies as a social studies because we don't get any speakers ame speakers को recognize करू आनु हम भीतर को हमर जेतर staffing होची recruitment होची समस्त से women faculty को नोचंदी and the most important thing is that we don't get even male students ame male students पाउनु so how can we expect that कि women studies social studies बोली the mainstream subject मन को सहित समान हे केन हे परिबो so these are the issues एवं मुझे तो गोटे यूजी लेवल कॉलेज रे I have been there teaching since last 30 years la mu seti padhouchi mu janichi and that is a very rural institution but believe me गोटे रूरल इंस्टीट्यूशन ने हमरो केही हेले बॉर्डर्स ना हमरो बहुत हॉस्टल अछि दैट्स अ बिग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वी हैव 7000 to 8000 students we have like 22 PG programs but even then हमरो वुमेन स्टडीज रे पुअर स्टूडेंट प्रति वर्ष आछथि हमें पाउछु प्रति वर्ष मेल स्टूडेंट्स इट्स नॉट दैट कि लेफ्ट आउट पिला माने इंटरेस्ट नै कि आछथि किंतु ता परे दैट क्वेश्चन कम्स कि हमें कोन करिबु या परे where shall we go people who are interested in academic जो माने academic जॉब करिया पे इंटरेस्ट कर नउचंती समान ता परे किछि करिया पे हमरो जो मे बी पैट्रियार्कल माइंडसेट है पर एसएसपी रे नाही सब्जेक्ट भाबे रिकॉग्निशन नाही पीएससी रे सब्जेक्ट भाबे रिकॉग्निशन नाही सो वेयर विल दे गो कोठी एते कम अछि यूनिवर्सिटी रे एते कम पोस्ट दुई तीनटा यूनिवर्सिटी रे अछि एवं दैट टू केवल रमादेवी रही जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट ता ओडी यूजीसी अप्रूव्ड एवं एमएन सब जो मन सब बाकी आउ सब थरे कोथरे फुल टाइम स्केल पाई कि सेमती फुल टाइम एकेडमिक पोजीशन से गुडा नुहे so this is a real problem and we have to extend women studies as a subject
at the undergraduate level. Not only as a part of the ethics and values, केवल ethics and values रो गोटे part करिकरी गोटे 25 मार्किया पेपर करिकि देले नै. I want a 100 marks paper जोठी कि सब पिला माने पढिबे across the streams. And I also request through this platform जो माने अछंती समस्त को I request कि please try at opening. आमे समस्त बर्तन try करिया कथा केमती at least सब autonomous college गुडा करे UG level ले सब autonomous college गुडा करे women studies center खोली परिबो. ताहाले जाय women studies center ता ताहाले जाय women studies as a subject prosper करि परिबो. Not at the peak level at the university बा PhD करितला level ले आदो किछि prosper हेइ परिबो नै. You don't have that orientation within the students. To get that orientation, students must be पिला माने समस्त +2 रो पढिबा कथा +2 पढिबा कथा एवं सेति पई स्पेशली women studies center सबुठी खोलिबा कथा. Thank you very much. I will take more time. Thank you very much. Thank you, madam. Let me compile the points that our speakers who are directly associated with the pedagogy of women studies and the development of women study centers. Number one is that we lack the, I'm talking with regards to Odisha only. We lack the uniform nomenclature. Since our speaker Mani Meklai madam is there, so I'm speaking in English. As part of UGC assistance, we opened women's studies in different universities, and Ravenshaw University. But finally, when we opened the department, we named it as gender studies. Till today, we have not given a declaration from the bureaucracy that gender studies and women's studies is one. Number one. Number two is when UGC gave the assistance to open women's study centers in different universities to impart education on women's studies, to counter the patriarchal mindset prevalent in higher education. At that point of time also, UGC forgot to point out that women's studies is a part of social science. That is how makes the difference for the status of women's studies in all the universities. All of us, we know today all women's study centers in different universities where it has, the university did not take much steps to convert it into a department like it happened in many universities of West Bengal and Tamil Nadu. Women's study centers are lacking funds to develop themselves. This is the number two is when students apply in jobs, they are confused. Women studies is not a choice. No, this is happening with public administration also. Since I taught public administration as a teacher, it is the fault of the bureaucracy. We need to enlighten the bureaucracy who are developing the application form that social science has developed a lot. For that matter, many science disciplines have developed a lot. We need to add all these subjects to the choices, and we need to have a coherent policy on that. Third thing is, all our speakers pointed out that, like Urmi madam said, that we lack the advocacy part. Now, I have gone through the UGC document. When UGC decided to open up women's study centers in different universities, one mandate was advocacy. Advocacy means, these centers would inform the public policy makers to have women-friendly public policies, so that in an institutionalized way, women study centers can assist the governance process. Now, that is actually lacking in all women study centers, and for that matter in universities, because the person who is in charge of the women study centers need to have a feminist orientation everywhere, in every university. So I think I have addressed all the things. The point that Jyotirmoyi madam pointed out, like association. Now, this is the time
madam, we can take the initiative for forming an association. That's not a great problem. Now, I would invite questions for 10 minutes at least. Vijay sir, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? हाँ मु केवल गोटे तथ्य देबी ଆଜ୍ଞା माने किछि information. I just want to share some information because we have been discussing about the growth of women studies in the different universities and colleges. Way back in 1999 in Calicut College, I think Urmi should remember that. She also attended that meeting. We had a women's cell, women's forum. We called it Shakti Calicut College Women's Cell. We launched it in 99. Then in 2000, I was there as a member of the faculty. At the MA level, we introduced a paper called Women, Society and Politics. We introduced an ideology, feminism at the BA level at that time in political theory. And more important than all this, in the +2 syllabus committee of which I was a member, we managed to introduce feminism as a topic. So students from +2 started reading feminism from that time. Today, I see the difference. When I used to go to different colleges and address on feminism, there used to be a lot of resistance from the boy students and male teachers. But today, I very gladly note that there is a kind of internalization of a feminist perspective, a feminist approach in the way our students these days, many students, in fact, both girls and boys, understand social issues, family, individuality, different institutions of the state. So we have to, in spite of all the difficulties that women's studies centers have been suffering and all the hindrances which have obstructed the growth of women's studies further, in spite of that, women's studies centers and efforts like other efforts like introducing topics in the curriculum, it has helped very positively in changing the orientations of the youth to a very large extent. Thank you. Hello. This is Manasi, madam. Hello. Manasi, please let Dr. Nityananda, he has requested to. Dr. Nityananda Barik, are you there? Yes, madam. Yes, madam. Please take 2 minutes only. ସମସ୍ତେ କହି ସାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିବି ନାଇଁ ଆ ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍ ଙ୍କ ପରେ you speak. ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍ 2 ମିନିଟ ରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ. Yes, madam. ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ରେ ଜଡିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାଶୟ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟଡି ସବଜେକ୍ଟ କୁ କେମିତି ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଚକ୍ର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ନେଇଛି ତାହା ବହୁତ ଗ୍ରହଣୀୟ। 1999-2000 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚକ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରେ। ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନୀ ମଞ୍ଚ ଭଳି ଏକ ପୁସ୍ତିକା ଯୋଉଟା କି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୁହନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାର୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମ୍। ସେଇ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଯେମିତି ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନୀ ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଲେଖା ଯେମିତି ବାହାରୁଥିଲା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଓଡିଶା ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉ କି ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗବେଷଣା ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମଟିଏ ନହୁ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ୱିମେନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ର ଯୋଉ ଅବଗତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାର ଯୋଉ ହର୍ଡଲ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଆମର ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଆମର
ऑटोनोमस कॉलेज जो हमर ओडासपुर ऑटोनोमस कॉलेज एवं रेवेन्सा रे यही जो जगह थिला एवं कोनटा रही छे आकु टिके त्वरान्वित करिया पई गवेषणा चक्र टिके आगु को पदक्षेप नौ एवं ए विषय टिके तर्जमा करिया पई एक अन्य एक प्लान जेनेरे कोटे निर्दिष्ट फोरम रे ताकु पकाले एरा उचित हबो इट इज माय सबमिशन थैंक यू मैडम थैंक यू डॉक्टर मानसी महांती थैंक यू मैडम ए किछि समय तले हिरणमयी अन्य मैडम मानकर प्रेजेंटेशन परे बहिदार सर जहाँ कथा रखिथिले मु से कथाटा टिके एक्सटेंड कर दउची आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय टीचर विजय कुमार बहिदार who taught us feminism in our MA level during my MA at Calicut Autonomous College, and he was the person who encouraged me to participate in IAWS conference in Odisha. That was first time held in Odisha, and he is the person who introduced women's cells. He already spoken about it, the Shakti Women's Cell in Calicut Autonomous College. ए सबु जो रही जी सेटा मते माने मोर फ्यूचर स्टेज रे मोर किछि जो मो सारंग ठारू जहा इनहेरिट कली बा हमर जो आईएडब्ल्यूएस सहित मोर जो प्रकार संपर्क रे आसिली मु जेते बेले वर्तमान एबे रायगढ़ ऑटोनोमस कॉलेज रे वर्तमान अध्यापनारत तो मु एठी कहूची जे हम कॉलेज रे गुडे वुमेन सेल अछि बोध हुए खलिकोट ऑटोनोमस कॉलेज परे मु कहि परिमनी अन्य कोटे थाई पारे बट हम कॉलेज से जो वुमेन सेल बहुत सक्रिय भाबरे कार्य करूची आ मु किछि से विषय रे टिके अल्प किछि कहिबी हमें बहुत गुडे प्रोग्राम करिछु हमें जते बेले एटा एक्टिवली स्टार्ट हैला माने 2018-19 बेलकू आमे गोटे प्रोग्राम गोटे रीडिंग ग्रुप करिछु जोथरे कि विभिन्न वुमेन स्टडीज रिलेटेड जेंडर स्टडीज रिलेटेड ऊपर डिस्कशन करूछु गोटे जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हेतला बर्मा कमिटी बिल ऑफ राइट्स जेंडर इक्वालिटी लॉ एंड ऑर्डर को नेकी दीटा फिल्म स्क्रीनिंग हेतला महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले को ऊपर आ गोटे वुमेन आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक गोटे लाइफ स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप करा हेची 2020 रे इम्पैक्टिंग ट्रेनिंग टू गर्ल्स स्टूडेंट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन समय रे अनेक समय रे गुडाय प्रोग्राम गर्ल्स हॉस्टल रे हुआ करी कि हमरो गर्ल्स हॉस्टल जते बेले खोलितला ओके मानसी प्लीज पॉइंट क्लास भी मैडम because it's already 7:15 we have yes I will finish the questions I will finish by 2 minutes but it is necessary जते बेले women studies ऊपर कुहा जाउची मो जिंसटा कहबा को चाहे गोटे पॉजिटिव अप्रोच नै कि गुडे सेमिनार्स मध्ये साइंस सेमिनार एठी साइंस एजुकेशन ऊपर हेतला जो माने women scientists at the forefront of the fight against COVID-19 ता ऊपर हमर साइंस स्टूडेंट्स माने तांकर प्रेजेंटेशन देइथिले तो कथा होची ए जो फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस ग्रेजुएशन लेवल रे जनरल इलेक्टिव रे पिला पढुचंती एमए रे हमें वुमेन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करूछु तो वुमेन स्टडीज जो सेंटर अछि गोटे फुल प्लेस तो निहाती भाबरे रहिबा दरकार आ जोठी जोठी जेमति कि बरमपुर यूनिवर्सिटी रे एमफिल थिला ताको आहुरी प्रचेष्टा बा दरकार ओडसपुर कॉलेज रे जो जिनसती हिरणमयी मैडम कहिथिले हमें मैडम वी आर वेरी थैंकफुल एक्चुअली एथिक्स एंड वैल्यूज पेपर टी मंडे रु हमर पढाबा बहुत कॉलेज रे मंडे रु ही पढाबा आरंभ होची आ से जो पेपर टी जो हेची बहुत भलो भाबरे हेची कथा होची मो एठी कोन कहबा को चाहूची जे ए जो जेतिकी जिंस पाखा पाखी चाली छी एटा से वुमेन स्टडीज रही अपदान जोटा कि उत्कल यूनिवर्सिटी रो स्टार्ट हेतिला आ अन्य स्तर रे अनेक जन व्यक्तिगत स्तर रे जेमति मो टीचर व्यक्तिगत स्तर रे जेतिकी एफर्ट देकी करिथिले तो हमकु निराश होबा को पड़िबनी बरम जेतिकी वुमेन सेल देखिबा को पड़िबो जे केते वुमेन सेल अछि और जो स्टडी सेंटर अछि सेमानकर कोलैबोरेशन हेले आहुरी गुडाय जिंस आगो को बढ़ी पारिबो Okay. IAWS रो प्लेटफॉर्म रे मध्ये Thank you Manasi, thank you. Now esteemed participants, could you please write down your questions in the chat box
so that the panelists will answer your questions. Please write down your questions in the chat box. Ma'am, please mate ଟିକେ chance ଦିଅନ୍ତୁ ma'am. हाँ आपण आंसर क्वेश्चन टा लिखि दियंतु चैट बॉक्स रे चैट बॉक्स रे लिखि दियंतु टाइम नाही ना सेति पाई मैम प्लीज मते ଟିକେ टाइम दियंतु मोर किछु कहबार अछि बरहमपुर यूनिवर्सिटी रो म कहूची रंजिता बेहरा. ओके कोंटो मैम मोर क्वेश्चन अछि तो हमर बरहमपुर यूनिवर्सिटी रे मु 2016 मसे ऑलरेडी डॉक्टरेट पाई जाइथिली. मोर करियर होची वुमेन स्टडी एमए एमफिल पीएचडी मैम. 2019 रे बरहमपुर यूनिवर्सिटी रे एडवर्टाइजमेंट हेतिला असिस्टेंट प्रोफेसर पई आमे अप्लाई करथिलु मैम. अप्लाई कला परे तले ओपीएससी हैंडल कला रिक्रूटमेंट तो हमको रिजेक्ट करा हे गला. हमको इन्फॉर्म भी करा हला नि जे तमे अप्लाई करथिलो आमे रिजेक्ट करूछु कि ओपीएससी नेला हमको किछि इन्फॉर्म ही करा हेनी. जतले ओपीएससी रे एडवर्टाइजमेंट हैला मु देखिली हमर पोस्टडा होम साइंस रे मर्ज हेजी. वन पोस्ट मर्ज टू होम साइंस. मु जतले यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पाखु जाई देखा करली बोले सर आउ हमर पोस्ट गला कुआडे आमे सब अप्लाई करथलु 2,000 टका बांधी थिलु हमको इन्फॉर्म करा हेनी ओपीएससी रे हमर पोस्ट नाही. मते वाइस चांसलर कहिले बरहमपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर चक्रपाणी सर कहिले आउ वुमेन स्टडी गोटे के सब्जेक्ट सेटा एटा होजे वुमेन स्टडी जहा होम साइंस सया बोले आमे गोटे पोस्ट को मर्ज कर देलु. मो सर को गोटे क्वेश्चन करथिली तो आपण जो मर्ज करले आपण को परमिशन के देथिले कोठु गाइडलाइन थिला तो सर मते कहिले जे आपण जाईगी हायर एजुकेशन को पचारो. बहुत मैडम मु बहुत अफेंडेड पाई जे बरहमपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर थ्रू रु एत अपमानित मते करा हला. मते कहले कि वुमेन स्टडी मीन्स आमे जहा बुझुचे एटा कहले पिला माने एनजीओ रे ही चाकरी करिवे तबे काहे के एठी धाई आछो एटा गोटे वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट एटा होचे होम साइंस. तो एबे जो हमर जहा डिस्कशन हला हमर अलिवा मैडम कहले मते पिला माने क्वेश्चन पचारचोंदी मते आंसर दबा में खराब लागुची. तो ए जो समस्त के मन कांसेप्ट अछि मैडम आई कुड गेट योर पॉइंट. This is where the institutional process is lacking. I hope I am audible. This is where the institutional process is lacking. I actually request if the Madhumita madam or Asa madam could answer these questions of the participants. मैडम गोटे सेकंड खाली कहली ज्ञान मु कहली जे ए जो वर्तमान जो मैडम हमर शेयर करले माने मु खाली तासंगे जोड़िया को चाहूची जे लास्ट 5-6 वर्ष तळे आमे किछि पैसा पाउथुल यूनिवर्सिटी मानकरे जनरल सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करिवा पई सेतबेले अमृता मैडम थिले एंड शिव I'm sorry to say that WCD department is yet to appoint anyone as director in the place of Dr. Amrita Patel. The WCD department is not having a regular director now, so gender sensitization program was her brainchild in collaboration, in consultation with the bureaucracy. So we need somebody to consult the bureaucracy and tell them that this is the issue. मधुमिता मु गीतांजलि कहूची मधुमिता मैडम थिला बेले आमे भी 10टा प्रोग्राम करिथिलु विथ द हेल्प ऑफ अमृता एंड इट वाज वेरी एनकरेजिंग. कॉलेज को विभिन्न कॉलेज को जाइकरी आमे सब जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करथिलु एंड इट वाज वेरी एनकरेजिंग एंड पिला माने बहुत इंटरेस्टेड हेकरी अटेंड करथले आ पार्टिसिपेट भी करथले सेगुडा को भी बंद हे जाईची. मैडम मैडम एते सब प्रश्न आलोचना होची आमे जे माने कहितिलु प्रथमे हमको 1 मिनिट लेखा समय दिया जाऊ. It is madam already 7:20 already. Let Madhumita madam speak. Tomorrow we can discuss. तबे माने कोन रहिला एते सब डिस्कशन न कोन कंक्लूजन रहिला रिजोल्यूशन ते निया हबो ना. I think the panel must respond. Please continue the discussion. Panel must respond. If we can this time, ma'am, 1 minute for some suggestions, not just questions. I think it is very important to suggest. So, Professor Das, Anantagiri Coach, I would like to ask a question. Is it possible? Yes. Okay. Professor Das and समस्त panelists मान को मोर अनेक श्रद्धा. हमरो आज जो discussions हला मूलतः जो structural issues एवं recognition संपर्क रे यहाँ सहित हमको मध्य
भाविबाकू पड़िबो ए विषय अनेक आलोचना करिवार रहिछि हमर जो करिकुलम मान रहिछि जेंडर स्टडीज वुमेन स्टडीज के सेत्रे गुटे मूलभूत आह्वान होछि कि जेंडर स्टडीज करिकुलम वर्तमान समग्र विश्वविद्यालय रे सारा पृथ्वी रे जो ज्ञान रो जो नूतन रूपांतर घटुछि उदाहरण स्वरूप जो ट्रांस डिसिप्लिनारिटी तो वुमेन स्टडीज को आम गोटे डिसिप्लिन भाव में नवा गोटे ट्रांस डिसिप्लिनारी डिसिप्लिन यही क्षेत्र में जो प्रकार काम दरकार केवल फेमिनिज्म जोटा केवल यूरो अमेरिकन फेमिनिज्म सहित आम केमती वर्तमान गोटे नूतन प्रकार फेमिनिस्ट डिस्कोर्स आरंभ करवा से फिलोसफी लिटरेचर एवं सोशल साइंस इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस कहीं वुमेन स्टडीज केवल सोशल साइंस भितर सीमित नुह तेणु से जो प्रकार ज्ञान सर्जना जो प्रकार करिकुलम बिल्डिंग डॉक्टर विद्युत महांती लक्ष्मी रिवेल गोटे बहुत महान कार्य करते तेणु जो इंडिजिनस फेमिनिज्म इन ए कंटेम्पोरारी प्लानेटरी पर्सपेक्टिव तेणु यही विषय आम कौन प्रकार आलोचना करुचु ओडिशा रे ए विषय मोर विनम्र प्रश्न उपस्थित पैनलिस्ट मान I will answer. Our Dijana madam let us take the questions. Dr. Manas Behera. Okay, okay. Dr. Manas Behera. Sunita Behera, if you can give your question. Yes, madam. Achimu. Acha, kuntu sir. Yes, madam. Madam, namaskar. Manas sir, question. Sunita madam, Manas sir, question. Manas sir, kuntu. सोनो मैडम नमस्कार समस्त को नमस्कार भलो आलोचना हला एवं गवेषणा चक्र जेंडर स्टडीज ओडिशा रे टॉपिक रखिला मोर सीधा पर्यंत जेंडर स्टडीज दायित्व रे थिबा समस्त अध्यापक अध्यापिका माने याकू जो माने मार्जिनलाइज्ड वुमेन विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन और डेप्रिवेशन और मार्जिनलाइजेशन ताकू लिंक करनांती से पर्यंत एटा डेवलप करि परियो नाही ओडिशा रे नंबर 1 Number 2, till now we have been observed by the society or being presented by the society as a elitist course or illicit teachers or elitist discourses on women freedom or women equality. ता पर कथा हला मोर 2 वर्ष अभिज्ञता रमादेवी रे मु जेंडर स्टडीज रे पढौतली जो रेगुलर रिक्रूटमेंट ज्योतिर्मयी मैडम हरिका आसिया पूर्वरु तो सेठी मोर अनुभूति होची ये गोटे फ्रस्ट्रेशन चाकरी कथा बा एनजीओ को जिबे भल पिला आसुनांती ता सहित आमर मध्ये दायित्व अछि जे पिला काहे के आसुनांती सेंसिटाइज जो पिला को करिया कथा ग्रेजुएशन लेवल रे जो कथा हिरणमय कहले जे तांकर अछि अंडर ग्रेजुएट सब कॉलेज रे फेमिनिज्म इलेक्टिव कोर्स अछि दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू ए कोर्स दैट इज फेमिनिज्म एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल इलेक्टिव कोर्स रे ऑनर्स मध्ये पढा होची पीजी रे मध्ये पढाई नॉट दैट कि ओडिसा रे फेमिनिज्म टोटल अंडर ग्रेजुएट कोर्स रे नाही किंतु आउट के एक्सपांड करिया कहले हम जदी ए अप्रोच ता नबा लिंक करिवा कॉमन वुमेन इश्यूज सहित ताको रेज करिया विभिन्न इश्यूज रे खाली ब्यूरोक्रेटिक वा फॉर्मलाइज हेई गला हमें निजे एवं ब्यूरोक्रेसी समालोचना करछन ठीक अछि हमें पैट्रियार्की अछि तो रहइबो अछि ताको फाइट आउट करिवा डिमोलिश करिवा वीकेंड करिवा से स्ट्रेटजी हम डेवलप करिया खाली समालोचना कले होबनी तो मोर कंक्रीट प्रश्न एवं सजेशन मध्य जे समस्त जदि एई दृष्टिभंगी रु नै परिबे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स को ओडिसा रे पर्टिकुलरली ओडिसा रे यार बेसी आवश्यकता अछि का ओडिसा रे पैट्रियार्की बहुत पावरफुल अछि एवं कास्ट मध्य पावरफुल अछि तेनु सब वुमेन को पुटिंग इनटू वन बास्केट दैट इज द मेजर लकुना विथ अस थैंक you sir. Now Sunita madam please give your question. हाँ मैडम नमस्कार मैडम मो बरमपुर यूनिवर्सिटी ओमेन स्टडी मोर पीएचडी कंटिन्यू चली मैडम मुझे जड़े जोड़ा मोर कंटिन्यू चली पीएचडी एबे मते ओमेन स्टडी को होम साइंस मर्ज कला परे ना मु ओमेन स्टडी हेई पाउची ना मु होम साइंस हेई पारुची जोड़ा कि मते मोर एबे प्री सबमिशन हला जहां भी काम मु ही क्लर्क मु ही पियोन सब मते ही करिया पड़ुची माने ओमेन स्टडी के एते अवहेला करा होची मु एबे भाबुची मु काहे कि ओमेन स्टडी करली आ मो लाइफ कोड ओमेन स्टडी पाई Okay. माने एते अवहेला कोन ओमेन स्टडी पाई गुला ठीक करा होची कि मैडम Okay. Now I would request the panelist, Professor Mani, would you like to respond? Professor Mani, would you like to respond? Can I just make one suggestion? Yes, Suranjita, yes. I'm so sorry. Actually, Yes.
it occurred to me that even if we do not have a separate center called Women's Studies, and there is a scarcity of settling after finishing a course in Women's Studies, University of Delhi, we have several papers in many disciplines which focus on gender studies. Like we also have interdisciplinary papers, the paper where students from science, commerce, and humanities study. Similarly, women power and politics. These are papers, disciplines, interdisciplinary papers, discipline-specific elective papers. Even in the BA program, we earlier used to have foundation course. Now we have a DSc paper called Human Rights, Gender, and Environment. So I think if in the curriculum framework, if all the other disciplines also insist that there should be one specialized paper which should be on the feminist theory and practice, or Boydar sir just mentioned that there were these papers introduced. I think a lot of scope and opportunity will open for the recruitment into these specialized subjects in across disciplines. So that will open more avenues for those who graduate or postgraduate with women's studies. Thank you. This is just a suggestion. We can work on those curriculum expansion as well. Thank you. Thank you. Professor Mani, would you like to? Yeah. Some of the questions which are there in the chat box, I could answer. I have responded to earlier questions. So there is a question: enough empirical studies to sustain a peer-reviewed academic journal. Of course, there are around 163 women's study centers, and most of the 82 universities have programs offered. Either PG or MPhil and PhD programs, and particularly in the PhD programs, you have the requirement also that you have to publish as per the UGC norm. So there are a number of areas in which various issues are being discussed and researches are being made, and scope for publication. And of course, there is an issue now with the UGC CARE listed journals alone will be recognized as publication. So you have journals like EPW and other reading journals which are quite quality in nature, but they are being recognized as UGC listed journals, and therefore people are choosing to multidisciplinary journals, interdisciplinary journals, which actually not really focusing on women's studies. So that is one issue, but we have sufficient empirical studies to definitely take forward to a peer-reviewed journal. And I agree with my suggestion that we have to have the database, and we have been suggesting that even the state data or whatever the component the development indicators they give, it should be the gender disaggregated data. And also whatever is being suggested on the infrastructure, and the not just academicians, but you also are suggesting that it has to go as a component, women's studies to go as component to other areas too. I fully agree with that. There is one from Manasa that Behra says that fails to extend because it fails to connect itself to the emancipatory struggle. Yeah. The component. So this is very important, and as I already pointed out in my own presentation, that there's lack of connection between the activism and the academician, which we need to really concentrate on. And there are certain packages where it is very strong, but in other areas it is not. And how UGC also defines the components of women's studies itself is taking away from the movements, and now kind of the draft guidelines has been of kind of an NGO-ized. If you go through, you will definitely appreciate the same. And I think some of the suggestions which I couldn't get fully because it was mixed both in English and Hindi or Oriya, but it was suggesting that you have to be transdisciplinary and introduce the
sciences, but social sciences and social sciences. Of course, the work you have suggested that in engineering and management. Yes, of course, I fully agree that I support that it has to go as a component, and it was in Telangana in engineering universities also introduced. Gender studies has been introduced as a foundation course, and in our university, our Women's Studies Center was instrumental in introducing women's studies as a foundation course, gender studies as a foundation course to all the universities. So there is a long way to go, and now we have the state policy for women also in Tamil Nadu, and we have been suggesting that women's studies should be given due recognition, and once it is done in some states, we can also write to other states to replicate it through this IAWS also. There are a number of other areas also. I don't know whether there is time to reflect on all. Yes, to reach out to the marginalized and grassroots women to understand their need. Yeah, I fully agree. I wanted to also say that there is an elitism in women's studies when we talk about the middle class, the upper middle class issues. But the real concern is about the grassroots women. That will really take you to the emancipatory component of women's studies. And very much people who are associated with women's studies and who are placed themselves there in women's studies are really concerned with that perspective. And people in IWS also very much. But it is not happening in all the women's studies center, and the perspective. Recently, I attended on program in another university in Tamil Nadu. They were talking about introducing embroidery, introducing tailoring to women's studies, which should go as a component. So I was wondering, the very vice chancellor was suggesting this. So I reflected there itself that it is not the business of women's studies to introduce those embroidery and tailoring courses. So that is a kind of a perspective it has gone. I'm sorry to say this, and it is still prevailing in some of the centers in the name of skill training, in the name of the skill development, whatever it immediately goes. And it was not like for non-formal group. It was that study students should be introduced to that. And I was wondering why it has come from the very vice chancellor. So I had to reflect on that. So I think women's studies, and somebody pointed out whether it was, I don't know, it was all in different language, I could not, something like home science. Is it equated to home science? I don't know. So that perspective is also there. So women's studies in the very perspective of recognizing the feminist scholarship and how throughout the decades, for the past 5 decades or so, people struggle to bring out the body of literature. The whole body of literature would definitely give us, and it has to be shared in the classroom in the name of either full discipline or as incorporating into papers into different social sciences and sciences. And the very objective is to integrate the gender component in the disciplines, wherein you will revisit your own disciplines with a gender perspective and incorporate gender concerns, which is hitherto missing. And we have to plan our journey accordingly. And we are going to have shortly from February onwards, inviting all the 163 centers from India to share their contributions and compile the kind of this thing with IAWS. So this will be happening, and I'll be writing to you all. I have also communicated to the organizers that we need the support of people who are here, the panelists, to share their own views and also reflect on the critically on the kind of the current women's study centers and their contributions and how it could be changed to the perspective which we are requiring. With this, I'll stop, and if there is any more, I'll be ready. Thank you, madam. Sorry, don't extend it too long. No, sir. It's already 7:35. We will be in trouble. Urmi madam, please take 1 minute. If you are there. Only 1 minute, 2 points. Yeah. First, जेहेतु मु ओडिया रे पूरा कहि दोछि समस्त सुनंदो
आमे जेहेतु गवेषणा चक्र रे केवल बसिकी थ्योरी रे पाठ पढौनु एटा क्लासरूम टीचिंग नुहे हमर सब बेले गोटे कंक्रीट किछ गोटे एक्टिविटीज चल जाय जेमति पैंडेमिक रे रहला सेही भली वुमेन स्टडी पई जदी आपण माने आमे माने मिसिके गोटे करिचु तबे वुमेन स्टडीज हो जेंडर स्टडीज हो जो प्रॉब्लम गुडी के रहिची आमे ऑल इंडिया प्रॉब्लम सॉल्व न करि परिया ओडिसा पई आमे गोटे सब कमिटी करा जाऊ मोर एटा सजेशन आउ जो थरे कि आमे समस्त जेति की एति वुमेन स्टडी रो काम करूथबा लोक रिटायर्ड करथबा लोक आउ फाउंडर डायरेक्टर आशा हंस मध्य तार एडे कि एटा गोटे धीरे धीरे जो प्रॉब्लम गुडी को होची तार सॉर्ट आउट करिया पे सेटा गोटे सब कने एडे बडो गवेषणा चक्र रे एते बडो स्ट्रक्चर भिते ए जिंस मेल डाउन हे जो जेमि के कहलानी एलिट रे भलिया रिसर्च करचंती के कोन करचन आमे केमिति आम सैक्रिफाइस करी कि आमे डाउन साइज हे कि केमिति काम करी कि सेटा बधे कि देखि नाथि सेति पई डॉक्टर मानस बेहरा एमिति सब देई जंती कमेंट होला ठीक अछि मैडम आमे सेकंड पॉइंट मु कहि दिए मोर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हाफ मिनिट कहि दउची सेकंड पॉइंट हैला आमे गोटे ड्राफ्ट करी कि ए ओडिसा गवेषणा चक्र तरफ रु हमर जेति कि हायर एजुकेशन रे आउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे ओडिसा रे यूपीएस रे बा यूजीसी को आमे गोटे लिखि परिबु कि जे एई सबु जो वुमेन स्टडीज ग्रेजुएशन लेवल ले जोटा कि हिरण्मयी कोदला आमे जदी पूरे देई परिबु बारंबार लेखा करी कि आपरे परे मूवमेंट करी कि पूरे देई परिबु जोटा कि मानसी भी कहतला आमे थरे जणे पसी गले से भितरे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन देयर विल बी टीचर्स रिक्वायरमेंट देयर विल बी मेनी मोर थिंग्स आउ सेई जिनिसटा जदी आमे करी देई पारंतु आ प्रत्येक यूनिवर्सिटी भितरे गोटे वुमेन स्टडी सेंटर निश्चित रहइबो से टेंटेटिव रहू बा फुल फ्लेजेड हो ता छडा बरहमपुर यूनिवर्सिटी जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम को भी टेक अप करिया पई मोर अनुरोध थैंक यू I will just take 1 minute. मैडम आपण कंक्लूड करंतु Okay. विद्युत मैडम कोन कहिथांते कि नहीं मोर किछ कहवार नहीं अच्छा मधुमिता मैडम आपण कंक्लूड कर दियंतु इट्स ऑलरेडी 7:40 Okay, it's already too late, and then we all are senior. Most of us we are senior citizens, so I will just take 1 minute. So whatever Urmi madam and Dr. Mani has also covered everything, all the answers. So all the questions have been solved. Only thing is, I would like to. Someone asked me. I think Mr. Giri asked me about the curriculum. So it is an interdisciplinary subject, and already women in politics, all women movements, and women in science, women in technology already exist as a paper. In Utkal University syllabus, I was teaching women and technology. And as we know, ecofeminism is a part of women's studies. So science, all disciplines are already there. Economics, history, literature, and political science, everything has been merged into the curriculum of women's studies. That part is over. But I'm extremely sorry to hear that in one university, it has been, the women's study post has been merged into home science. So Gaveshana Chakra, I would request, we must take it as a issue, and then we must write to the higher education department, also to the higher education council, that to resolve this issue. And another thing, we will take all the suggestions given by Dr. Urmi, and then I am very sorry to say, because Manoranjan sir is there, Bidut madam, Vijay Bhaidar sir, Asa madam, look at the position of women in our state. I am very sorry to say there are 15 universities and there are only 2 women vice chancellors. That means we do not have women academicians in our state, or even if the women academicians are there, they are not visible. So it is nothing directly related to women's studies, but this is a point to be seriously thought of. Another point is, we today in the afternoon we discussed so much about the new national education policy 2020, and it was formed under the chairperson Kasturi Rangan, and there were 10 members. Out of 10 members, there was only one lady, that was the former vice chancellor of SNDT University. So 9 men, 1 women, they formulated the national education policy. So where do we stand? We are fighting, we will continue to fight, and there will be some day when we will have 50% women in all policymakers, in all bureaucracy, in parliament, everywhere. I will not be there, but future generation will be there. They will see, and I will just like to quote Kamla Vasin,
who is no more here, she used to come to Utkal University, and always she used to say that na kam na jada, bas adha adha. We need 50% of everything, the sky and the earth. So let us fight for equality, and we are not superior than men, and neither we are inferior to men. That we must give a lesson to our young generation. Thank you so much, Swarna madam, and Asa madam, and Vijay Bhaidar madam, Manoranjan sir, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. I request the organizers of this panel to prepare a detailed report mentioning all the suggestions also, and then Gaveshana Chakra, many of us will follow it up in the best possible way. Yes, sir. Yes, sir. We will do that. गोटे गुरुत्वपूर्ण घोषणा थिला प्रथम कथा हला जे मु एई पैनल रो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देबी बहुत गोटे रोमांचकर अनुभूति थिला एई पैनल रे बसी सुनिबा एवं किछि अनुभूति नबा तेबे काली हमें 2:30 रे समस्त भेटुचे जो माने गवेषणा चक्र रो सदस्य अछंती गवेषणा चक्र रो एक्टिविटीज रे बड़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करछंती आमे समस्त को आमंत्रण करूछु आजीवन सदस्य एवं सदस्य माननकु 2:30 रु 3टा पर्यंत हमर जनरल बॉडी मीटिंग अछि 3टा बेले हमर काली 2टी पैनल अछि 3टा बेले आमे हमर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी इन ओडिशा ऊपर गोटे पैनल अछि जोठी प्रोफेसर प्रेमानंद पंडा चेयर करछंती एवं हमर स्पीकर अछंती लंबोदर प्रसाद सिंह एवं वीरेंद्र नायक आउ गोटे पैनल अछि जोटा कि प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन जोठी कि हमें ओडिसा अजित महांती थिले नाही अजित सर अछंती किंतु सी आज सकाळे मते गोटे मेसेज दैचंती जे तांकू माइल्ड कोविड माने हेइची बोली से मेसेज दैचंती जोते कि तांको काश ठंडा एवं काश टिके अछि जोते कि से टिके अनकंफर्टेबल फील करचंती बट से सेति पई कंफर्म करना हंती आगुर कंफर्म करथिले किंतु एबे टिके से ये करचंती बट एनीवे आम पाखरे आहुरी 2 जण वरिष्ठ अछंती स्पीकर अछंती एवं आउ गोटे बड़ पैनल होची प्रॉब्लम्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन इन ओडिशा जोठी कि आमे ओडिसा रा केतक अग्रणी शिक्षक ऑर्गेनाइजेशंस अछि आमे सेमानकर मुखिया माननकु आमंत्रण करिछु सेमाने तांकर वक्तव्य रखिबे एवं एटा मध्य आजिर ए जो पैनल गुडी भली अति रोमांचकर हबो बोली मोर आशा तेणु मु पुनी थरे आमर गवेषणा चक्र सदस्य आजीवन सदस्य समस्त को आमंत्रण करुच्ची आसंता काली जनरल बॉडी मीटिंग जोटा कि 2:30 रे हबो समस्त आसी जॉइन करिवा पई एवं आमे समस्ते 2:20 सुधा आमे समस्ते लॉगिन करिवा एवं 3टा बेले मु हम समस्त पार्टिसिपेंट मानु को अनुरोध करिवि 3टा बेले समस्ते आसी जॉइन करंतु आमर 2टी पैनल अछि मुक्त अधिवेशन अछि गवेषणा चक्र जोटा सबुठारु बड़ आकर्षण बहुत ओडिसा रो बहुत बुद्धिजीवी माने सिठी आसंती एवं सेमाने सेमानकर वक्तव्य को सिठी रखंती खूब कम समय भितरे एवं सेईटा ही मते लागे गवेषणा चक्र सबुठारु बड़ आकर्षण बोली मु समस्त को आमंत्रण करूछि कालीर प्रोग्राम पई एवं एथि सहित मु विजय बहिदार सारंकर जदी किछि आउ किछि मेसेज न थाए ताहले मु एठी आजिर ए जो सभा कार्यक्रम एठी समाप्त हैला तेरे सार आउ कोन किछि अछि कि आजि कहिबा पई नहीं किछि कहिबा पई नहीं समस्त को केवल हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कालीर कोऑर्डिनेटर को नाम टिके कहि देंतु कालीर कोऑर्डिनेटर स्काईलैब दीदी अछन स्काईलैब कालीर कोऑर्डिनेटर आउ बस सतिकी काली भेटिबा काली 3टा बेले सब पैनल आरंभ हबो ता पूर्व 2:30 रे ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग ता हबो करना जाओ ने was a great panel आज्ञा मैडम कोन कहउचंती आशा मैडम वो टिके डाउनलोड करूची तुमे जीवनी हां छाडी दबो आज्ञा हां मो अछि क्लोज करंतु नी किंतु हमर सरी गला आजर अधिवेशन सरी गला हां आपण छाडी करंती से एटा रिकॉर्डिंग ता डाउनलोड हबो आपण छाडी करंती थैंक यू रिकॉर्डिंग ता डाउनलोड हबो सर मु छाडीबी तमे टिके रह गया छाडीबो माने तमे रहि जाओ टिके रिकॉर्डिंग मैडम डाउनलोड करूचंती पार्टिसिपेंट माने छाडी परिबे हां मु जानि ने कोन प्रॉब्लम आसी जीवो आज तो बहुत प्रॉब्लम होला ना नहीं पूरा क्लोज करंतु नी पार्टिसिपेंट छाडी कार काम थबा कोन
मुझे सर मु आपन तो जानि जे मु संबलपुर रहउती तेणु मुझे आसी बाजार घाट मुझे करिया बुझी बंदा नै जीवो तेणु मते टिके छाडंतु सर हो जा बाबूजी आमे चली जिबा आमे चली गले भी तो एटा चलीबो ना मु कोन रिकॉर्डिंग टा बंद कर देबी हाँ रिकॉर्डिंग टा बंद कर दियंतु रिकॉर्डिंग बंद कर दियंतु डाउनलोड करो The recording has stopped. थैंक यू मु तो घरे बस पड़तिली नाइ देह तो खराब अछि देह आउरी भलो हेइनी नहीं परा मु तो स्वेटर देहरु काढी पन्नी माने एते देह आपन को देह भी एते खराब रे आपन एती दायित्व नै चंदी केड़ बड़ कथा धन्यवाद एटा भलो हैला आज टिके वुमेन स्टडी रो जिंसटा टिके डॉक्यूमेंट करै दियंतो जदी किछि दरकार पॉइंट्स भी मु मते कहिबे मु लिखि नै नै आइके तो हमें रिकॉर्डिंग करिछु ना हम एटा को हां तबे ठीक अछि कर दो ना मणिमेखला मोर बहुत गुड फ्रेंड वेरी क्लोज फ्रेंड हां Despite all everything. मैडम नमस्कार हमें आपन देखि पारुनु You are looking younger. आपन को मोना मुटे देखिया चाहू छी नमस्कार करूची I am looking haggard. एतरे कोन अछि यू आर माय टीचर COVID बहुत है जी very Okay, I am leaving the meeting. Thank you all very much. थैंक यू रोई थांतु आपन कोन करी ए सब सरी जाऊ मनोरंजन सार को देह भलो अछि ना हां वर्तमान भलो भलो अछि ना मैडम सार एकाठी जाओ एनीवे ओह केते ठंडा तापरे ऑनलाइन रे एते समय रहिबाटा भारी स्ट्रेनुअस ऑनलाइन रे ना ना आपण माने मूल रो जे मु खाली सेई गोपालन कर सुनिली आउ सुनी पाली नि केना देहटा टिके भलो लागु नथला तापरे वीडियो सुनुथुली गोपालन के ना ना से जो कोन तो अनिल प्रोफेसर अनिल गोपालन के ना ना मु तांको से जते बेले एकलव्य आरंभ करे अच्युत बाबू हेकन ऑर्गेनाइजेशन को आस्थिले आमे सब एकाठी बसी थिल 30 इयर्स बैक बदे मु कहूची से मु तांको जानि परिबेनी से मते जानि परिबेनी एबे रिटायरमेंट पर तमे सेमिति गोटे किछि करा रिटायरमेंट परे कर आपण माने साथ न देले किछि हेई परिबेनी जण किया किछि काम हेई परिबेनी आई ट्राइड अ लॉट देखुना जे एते काम करिकि भी जने हमको कह दो जने हम एलिट भलिया काम करछि त ओडे कथा कि भाबिबा कथा ना मन करिया पुरोरु हमें भी सब प्रकार क्रिटिसिज्म सुनिबा दरकार कहउचंती जनरलाइज कर देले त भलो लागेनी ना ओडिसा गवेषणा क्षेत्र रे ना किंतु तांकर भी गोटे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अछि सेरा नाही ना से जोडा कहउचंती सेटा सत्य भी अछि किछि लोकन को पई समस्त को पई हमें तिके सही दवा दरकार ना ना सेटा तो ठीक तथापि बेले बेले सही हुए नहीं नहीं सुन केते बेले कोठी तांको गोटे फील हेतिबो से कहि देले कोन हां एंड दैट इज हाउ वी ग्रो मु अवश्य जानि नि से कोठी वुमेन स्टडी पढैतिबे कोन करना टिके रीना को टिके रह जेबो बंद करिवनी I am just downloading the transcript that will help you to write. Yeah, but the transcript I don't think will help because I was reading the transcript. I know. And it writes very strange things. Very, very strange things. The recording will help, and a number of persons have taken notes. Recording is in the cloud, so Satan problem nahi. Recording will help, but the transcript will not be of much help. Anyway, कर देछि हां ना कर दे थांतो ओके ओके नमस्कार keep on talking कथा होता तमे बट नहीं ठीक है जानतो अपन ओके खाली कमेंट कोन आइछि देखि चाहते मैडम कोन एते कासुचंती आशा मैडम हां देह बोल नै परा कोविड ओके स्वर्णा देखि रे जो सेटा डाउनलोड हे जाय छे मैडम जानी पारो एटा किछि रीना ही कहि परिए डाउनलोड हेछि कि नहीं बोली अच्छा रीना को पचर दियो से पचर रिकॉर्डिंग ता कर दे छी कि नहीं
चैट को कॉपी करना है। Chat को I tried doing. I got 3/4 of. इन्हें मैडम एक डाउनलोड हो गला तो रिकॉर्डिंग सेव कर देची। अच्छा होता है बे हमें छाड़ी देबा मीटिंग तो हां मु क्लोज करबी अपन मन छाड़ दियंतु मु चैट टा कॉपी करछि। अच्छा हो ओके देन ठीक अछि सोना। हां ठीक अछि मैडम मु छाड़ी देली। हां आई एम विथ रीना। हां मैडम नमस्कार रहिली। बाय मणि बाय मम्मी रही। I saved it, Reena, but it doesn't look as if it's saved properly. 3/4 I copied. But कॉपी नहीं हो रहा चैट में भी डिफॉल्ट इट विल सेव आई विल ओपन और it's somewhere saved, but I have to look for it. Where मैं देखूंगा। It's on its own. You must just save it because you have less files, no? Just save it. What I'll save it? Oh, transcript. ट्रांसक्रिप्ट में सेव नहीं कर पाई। It'll take 1 second. कहाँ सेव करूँ मैं तो ट्रांसक्रिप्ट बंद है। क्यों बंद है? It's live. ट्रांसक्रिप्ट तो View full transcript कर देना. View full transcript. And then save transcript. Just I'll do that. It'll save on your computer, but mine Save transcript, okay. That's it. Okay. Show folder. बंद कर देते हैं. I'm tired now. ठीक.